So hello everyone, how are you? I hope that you are doing good and health wise also you are good. So here we are with the question discussion session on oscillation. In the previous session we have discussed about what? We have discussed about the questions of RBD, which is rigid body dynamics. In today's session we are going to decode the oscillation. Uh, Same way may we will do some questions, understand the concept. Now let's just move with the very first question. This is the question. Let's try to solve this question. I'm giving you 1 minute to solve this. A particle of mass 0.5 kg executes simple harmonic motion under force F is equals to minus 50 x. This Newton per meter is the dimension, okay, of this constant. The time period of oscillation is x upon 35 seconds. The value of x is, we have to find. Everyone try to find out. It's very easy question by the way. Hello Subhash, live stream is going on now. Any problem? Yeah, hi Arun. It's going on smooth, na? Live process. Yeah, I didn't check, but I was. I have checked it. Yeah, It's showing that I'm live. okay, I'll wait now. 2 minutes, I'll check in YouTube also. Got it. So guys, solve this question. A particle of mass 0.5 kilogram executes simple harmonic motion under the force minus 50x. The time period of the oscillation is x by 35 seconds. The value of x is. How to solve these types of questions? So firstly, it is given in the question itself that it is minus 50x, which means this particle is executing SHM. It's very obvious. Okay. Now, so we can compare it with the force equation, which is F is equals to minus kx. From here, we can say k is nothing but 50. Okay. What we have to find out? We have to find out the time period. So by this, we know the formula. Time period is nothing but 2 pi square root of m by k, isn't it? The time period will be 2 pi square root of mass is 0.5 kilogram and k is 50. Give me a moment here. So टाइम पीरियड यहाँ से आपके पास क्या है? 2 pi. This we can write as 5 upon 500. So time period is coming out as 2 pi by 10. Because it's 1 by 100. 1 by 100 को square root से बाहर लेंगे तो 10. And ultimately it is pi by 5. अच्छा, one of the student has answered. Okay, Subhas, good to go. Thank you. So time period is coming out as pi by 5 seconds. But in the question that is mentioned as x by 35. So what we have to do? We should multiply 7 in this expression and put the value of this pi also. And we don't need to multiply 7. Just put down the value of pi as 22 by 7. So x, what you are getting here, pi by 5. So it will become 22 by 7 into 5, which is 22 by 35. Now compare it with x by 35. So x का वैल्यू आपके पास आ गया क्या? 22. ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन?
और ये जेई मेन का क्वेश्चन है, बताओ इतना इजी क्वेश्चन। एनी काइंड ऑफ डाउट एनीवन? कोई डाउट है आपके पास? जेनवी हावेरी, छिल्लर, व्हाट इज योर एक्चुअल नेम? जेनवी हावेरी गाइस, एनी काइंड ऑफ डाउट? दिस बगानी बकेट, any kind of doubt in this question? Yes, no, give me response in the chat box. Chalo. Now this question. A particle is doing simple harmonic motion of amplitude 0.06 meter. Amplitude means, what is the amplitude? If a particle is doing SHM like this, so this, the maximum separation or maximum distance from the mean position is the amplitude. ठीक है, अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो मीन पोजीशन दैट इज x इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक आया अगर ये, और फिर वापस से मुड़ा, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। द कोऑर्डिनेट हियर विल बी x is equals to a, which means the maximum displacement that a particle can have in SHM from the mean position is called amplitude of that. Time period is also mentioned as 3.14 second. The maximum velocity of the particle we have to find. ठीक है, देखो, वी नो दैट v इज नथिंग बट, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट a sin omega t. For simplicity we will take this equation. Okay, so if you differentiate this, it will become a omega cos omega t, and this dx by dt is nothing but velocity. ठीक है, dx by dt क्या है? वेलोसिटी है। अब देखो, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अब v तो टाइम का फंक्शन है, बट साथ में cos का भी फंक्शन है ना। So what we can say here, the maximum value of v that can be possible when this particular function can be maximum. So if cos omega t is maximum, which means the maximum value it can have as 1. So v max here will become a into omega. ठीक है, अब देखो ओमेगा का वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो सिर्फ टाइम पीरियड गिवन, which is 3.14 second, and amplitude is given 0.06 meter. Now how to find omega? Omega is nothing but 2 pi into f. F is nothing but frequency. So it will be written as 2 pi by capital T, because f को we can write 1 upon t. So omega is equals to 2 pi by 3.14. 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों ताकि पॉइंट्स हट सके. So it will become what? और you don't need to multiply, सीधा पाई की वैल्यू पुट करो. We know that pi is nothing but 3.14 अपॉन 3.14. ये कैंसिल, तो ओमेगा का वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज द एंगुलर स्पीड. तो ओमेगा का भी वैल्यू आपके पास है. नाउ ए यू आर आल्सो हैविंग, देन व्हाट इज द वी मैक्स? सो वी मैक्स विल बी a is 0.06 multiply by 2, which is 0.12. Oh, this is being asked in centimeter per second, but this we have derived in meter per second because amplitude we have taken as it is. So we need to convert it into centimeter. So 1 meter is 100 centimeters. So this much of meter. Just multiply this expression when you want to convert meter to centimeter. Multiply 100 into. So it will become 12 centimeter per second. This is the maximum velocity. And that velocity is also the linear velocity that it can. Got it? I hope that you have got it. Any kind of doubt, guys? If you are having any kind of doubt, you can use the chat box or unmute yourself and then ask any kind of doubt. ठीक है?
The displacement of a particle executing SHM is given by x is equals to 10 sine omega t plus pi by 3. The time period of the motion is 3.14. The velocity of the particle at t is equals to 0. देखो अभी previous case मैंने solve किया है as it is था. Now you will solve it and let me know the answer within 1 minute. Although this question does not long for hold for 1 minute, but I'm giving you 1 minute to solve this down. Please solve it, everyone. Everyone, please solve it. Okay. So let's just try to solve it. X is given to you as 10 sine omega t plus pi by 3. ठीक है. देखो again dx by dt करो. Differentiate it with respect to time, you get the velocity, which is nothing but 10 omega cos omega t plus pi by 3. Now you got the expression of v. This is 10 omega cos omega t plus 5. Now put t is equals to 0 because we have to calculate the velocity at t is equals to 0. So you will see that v will become 10 into omega cos omega into t will 0. So it will be 0 plus pi by 3. Now cos pi by 3 is nothing but 1 by 2. So it is 10 omega by 2, which is 5 omega. Now here we should pay attention to this 3.14. So we can write omega is 2 pi by time period. Phi का value put करो as 3.14. Time period is also 3.14. Cancel it out so that you will have 10. And what is that? 10 meter per second. So here the answer is 10 meter per second. देखो differentiation में अगर किसी को problem है तो just bring your attention here. dx by dt. Firstly, we will differentiate this function as it is. So this will behave as sin x. Differentiation of sin x will become cos x. What is written in the place of x? Omega t plus pi by 2. Now this inside is also a function of time. So we need to differentiate it again. So differentiation of omega t plus pi by 3 will become, देखो, differentiation of t with respect to t will become 1. So it will become omega. Plus differentiation of any constant will become 0. So it is coming out as omega cos omega t plus pi by 3. अब देखो ओमेगा के साथ ये 10 भी तो था ना पहले मल्टीप्लाई, तो दिस इज 10 ओमेगा, है ना. आई होप दैट यू हैव गॉट इट. नाउ दिस वन, let's just try to solve this one. A particle executing simple harmonic motion with amplitude a has the same potential and kinetic energy at the displacement. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए एंड हैज द सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्प्लेसमेंट. तो किस डिस्प्लेसमेंट पे?
उसके पास सेम नंबर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी होगी, that we need to calculate. So suppose this is a particle, from here to here it is executing motion SHM. It's moving like this and this. Okay, so at this is minus a, this is plus a, and this is x is equals to 0. This is the mean position. So let's just suppose कि at this particular position, at x is equals to, let's say, x, the particle having equal kinetic and potential energy. Now we know that kinetic energy in SHM is given by 1 by 2 mv square. Now v का expression is nothing but omega square. Oh, sorry, a omega cos omega t. So it will become 1 by 2 m a square omega square cos square omega t. ठीक है. Now this m omega square is nothing but k. So it will be written as 1 upon 2 k a square cos square omega t. Now this is the kinetic energy. ठीक है. Why I have written m omega square, मैंने अभी बताया था अपनी पिछली क्लास में आपको. दिस इज रूट के बाई एम. ओमेगा इज नथिंग बट रूट के बाई एम. तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस के विल बिकम m omega square. Now potential energy is very simple. 1 by 2 k x square, 1 by 2 k x का वैल्यू is a sin omega t. So we can say a square sin square omega into t. Got it? और एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस वुड बी गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स. If you remember this formula, that would be very easy for you to solve this question. ठीक है. Put this in place of v. So kinetic energy will be having as 1 by 2 m v square will become omega square into a square minus x square, and potential energy will become 1 by 2 k x square. ठीक है. अब देखो k को again we can write m omega square. We have to find out the displacement at which kinetic energy is equals to potential energy. So kinetic equals to potential 1 by 2 k x square, and k का वैल्यू है m omega square a x square is equals to kinetic energy 1 by 2 m omega square a square minus x square. Okay. M omega square by 2 cancel out from both of the side. It will become 2x square is equals to a square, which means x का वैल्यू मेरे पास है a by root plus minus a by root 2, which means if x is equals to plus a by root 2, so for at this location kinetic and potential will be equal, and same for the negative side at minus a by root 2 the kinetic and potential will be equal. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. आई होप कि दिस क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर विद यू. देखो अदरवाइज आपको क्या करना होता ना, यू जस्ट के स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं आप, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर ओमेगा टी. तो यू हैव टू डील इट लाइक cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर ओमेगा टी. सो यू टेक cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 0. This will become what? Cos 2 theta, which means 2 omega t is equals to 0. Now cos 0 will be at 0 degree. So for this you have to calculate the time. ठीक है ना. Clear? At that point you can also. Now this one.
if x is equals to 5 sine pi t plus pi by 3 meter represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of motion respective. देखो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन, I'll give you a general equation of simple harmonic motion which is a sine omega t plus phi naught. यहाँ पे x is nothing but displacement from mean position. Okay, a is the amplitude. A represents what? Amplitude. This omega is the angular frequency. T is time and phi naught is initial phase. Initially at t is equals to 0, where the particle is, tells you about that. This is initial phase. Clear? Now, according to the given question, x is given to you as 5 sine omega t plus pi by 3. Sorry, omega के place पे है pi t plus pi by 3. Now, if I ask you what is the amplitude, everyone in the classroom tell me what is the amplitude. और देखो ये मीटर में है, तो यानी कि जो भी क्वांटिटी लिखी होगी ना वो मीटर में ही होगी. क्लियर एवरीवन? जेएनवी हावेरी, छिलर और these no name students. Okay, देखो if you just compare it, a is nothing but equals to 5. So from here amplitude will become 5 meter. देखो सब में सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ पे और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो ये दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट ही हो गया. द ओनली रिमेनिंग ऑप्शंस आर 5, option B or option D. So in this you have to check with time period. Now we know that omega is equals to what? 2 pi by t. So t is also 2 pi by omega. Now in place of omega what is written? Pi is written. So 2 pi by pi, which is 2. So 5 and 2, which means option B is the correct one. Clear? Everyone, is it clear to you? देखो, if you are wondering ki how this uh, why we are writing x is equals to a sine omega t plus phi naught, why not something else? So I have the answer for you. This. Now we know that for oscillatory motion, the force equation is nothing but f is equals to minus f is equals to k into minus x raised to the power. यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है? n can only be odd integers. Odd integer. ठीक है? Which means 1, 3, 5, 7, 9, etc. ठीक है? But when n is equals to 1, so for this case f will become minus kx. This minus will come out, and this equation of force is the force equation for SHM. This is the case for simple harmonic motion. Simple harmonic
motion. ठीक है. अब यहाँ पे if you want to calculate the acceleration, so we know according to Newton's second law of motion, this f is equals to minus kx में we can put f is equals to ma, which is also equals to minus kx. Now from here acceleration is nothing but k upon m into x. Got it? Now this acceleration is equals to minus k by m into x. If I want to calculate in terms of dv by dt, I can write it minus k by m into x. Or further, I can write it as d2x by dt square, because v is nothing but dx by dt minus k by m into x. This d2x by dt square plus k by m into x. This is the differential equation of degree 2. ठीक है? Of order 2. कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर की. When you solve this equation, you will find that x is coming out as a sine. The solution of this is a sine omega t or a cos omega t. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा is nothing but square root of k by m. ठीक है. So from here this equation arises. Further, if we solve it, we get velocity as well as acceleration. So for velocity, just differentiate it first with respect to time. So you will get v is equals to a omega sine omega t. And further, if you differentiate it, it will become acceleration, which is a omega square minus a omega square sine omega t. Velocity को जब करोगे differentiate, so sine omega t will become cos omega t. And acceleration के लिए again से differentiate करेंगे तो a omega square sine omega. अब देखो ये भी एक इक्वेशन थी एक्सेलरेशन की, ये भी एक इक्वेशन. फर्दर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a sin omega t is nothing but x. So I can write a is equals to minus omega square into x as a function of time. Now equation first and second को compare करोगे. This is a is equals to minus k by m into x. A equals to minus omega square into x. So from here omega square is coming out as k by m. Omega is square root of k by. Got it? So that's how we arises this equation arises. Okay na? Clear? Now move on to the next question. Identify the function which represents a non-periodic motion. अब देखो जब भी कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन कोस का, that will always represents a periodic function. ठीक है? So in this expression, if you will see option A, this is sin omega t plus pi by 4. Sin omega t plus pi by 4 क्या है? This is a periodic function क्योंकि this is a sinusoidal function. तो जैसे ही मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, फिक्स पीरियड, इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इट्स वैल्यू, बिकॉज साइन जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज अ काइंड ऑफ
periodic function in itself, like this. If we add two periodic function plus periodic function, 1 plus 2, this will become what? This will always come out as periodic function. ठीक है, which means option D. देखो, sin omega t cos omega t, ये भी क्या है? एक periodic function. This can also represent as a itself is in terms of sin or in terms of cos only. How? चलो, let's do it. Sin omega t plus cos omega t. ठीक है, if we divide and multiply by root 2 over here, root 2 by root 2 and root 2 by root 2, and I take root 2 as common and 1 by root 2 as remain as it is here. So I can say 1 by root 2 into sin omega t plus 1 by root 2 cos omega t. Now root 2 into 1 by root 2 I can write cos pi by 4, है ना, sin pi by 4 भी लिख सकता हूँ, but cos pi by 4 भी, plus cos omega t sin pi by. So what it would become? Sin a cos b cos a sin b. This is a sin a plus b, which is omega t plus pi by 4. देखो ये भी तो अपने आप में एक साइन का ही फंक्शन है. So this is also periodic, and like as I told you, sum of two periodic function gives you a periodic function. ठीक है, so this is also periodic, this is also periodic, clearly visible. So only this function is not showing us. This is an exponential function and that is also negative. That will gives you like this. Graph of it will be like this. ठीक है, on the opposite side, like this. At t is equals to 0, it will become e raised to the power 0, which is 1. और अगर e raised to the power omega t होता तो it would be go like this. ठीक है ना, but this is non periodic because ये अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा. ठीक है, so option B is the correct one. We have to identify the function which represent the non periodic motion. So ये option. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion. तो सबसे पहले तो फेज समझो क्या होता है. सपोज अ फंक्शन इज गिवन एज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव नोड. तो ये जो ओमेगा t प्लस फाइव नोड है ना, इसे मैं फाइव बोलता हूँ. दिस फाइव हियर इज नथिंग बट द फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट. फेज से मतलब क्या होता है? इट टेल्स यू अबाउट द स्टेटस ऑफ status, which means at particular time instant where is the particle, because when you put the value of time, then sign will give you a value. Suppose if t is equals to 0 and pi node is pi by 2, so when you put t is equals to 0, sign will become sin pi by 2, then sin pi by 2 is 0. So 0 multiplied by a will be 0, which means x is 0. इसका मतलब क्या हुआ कि at t is equals to 0 particle is at origin or at the mean position. ठीक है, so this phase gives you the value of displacement at a particular instant. ठीक है, where the particle is, it tells you about where the particle. ठीक है, now phase difference is what? Suppose there is a function y which is a sine
omega t plus phi dash. So in this, if you will see, this is represents phi 1 itself, this is represents phi 2. So delta phi here is nothing but phi 2 minus phi, which is phi dash minus phi 1 for this equation. बट यहाँ पे किसका फेज डिफरेंस पूछा है? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. तो डिस्प्लेसमेंट को वी शुड राइट एज ए साइन ओमेगा टी. इनिशियली ऐसे लिखते हैं. देन इफ वी डिफरेंशिएट इट वी विल गेट वेलोसिटी एज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. एंड इफ वी फर्दर डिफरेंशिएट इट इट विल गिव यू एक्सेलरेशन बट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. अब देखो ये माइनस आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा. वी हैव टू जस्टिफाई दिस माइनस. सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. अब साइन तो माइनस को बाहर फेंक देता है. ठीक है. साइन को ऐसे किस एंगल में रखूं मैं ताकि मुझे नेगेटिव वैल्यू मिले? तो साइन 0 से 90 में पॉजिटिव है, 90 टू 180 में पॉजिटिव. लेकिन 180 जैसे क्रॉस करेगा तो साइन विल बिकम नेगेटिव. सो आई कैन राइट इट एज साइन पाई प्लस ओमेगा टी. अगर मैं ये लिखता हूं बताओ, साइन ओमेगा साइन पाई प्लस ओमेगा टी, तो दिस इज साइन 180 प्लस थीटा. और 180 plus theta is coming out as sine theta, but it would be negative because it is crossing the second quadrant. Sine is always positive in these two quadrants. 180 plus means it is in the third or in the fourth quadrant, but specifically third तो mention नहीं, 3 pi by 4 mention नहीं, क्योंकि 3 pi by 4 होता तो sine का cos बन जाता. ठीक है. So it is in the 180 plus में है. बस ये बात आप याद रखो. तो acceleration will be like a omega square sin omega t प्लस फाइव. अब देखो ये क्या है? फाइव टू है. एंड दिस इज व्हाट? दिस दिस इज व्हाट? फाइव वन. नाउ डेल्टा फाइव इज नथिंग बट फाइव टू माइनस फाइव वन. फाइव टू इज व्हाट? ओमेगा टी प्लस फाइव. फाइव वन इज ओमेगा टी. दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. सो डेल्टा फाइव विल बिकम व्हाट? फाइव. ऑप्शन डी इज. ठीक है. नाउ दिस वन. Average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration is. चलो, I'll give you this question to you. Try to solve it down. बताओ, बहुत easy question है. Average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration. अगर यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व करोगे, सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसने और ये यहाँ पे पहुंचे. चलो x इज इक्वल टू 0 भी हम ऑलवेज वी विल नॉट टेक इट एज, वी विल टेक x इज इक्वल टू x नॉट. यहाँ से इसने SHM स्टार्ट किया एंड इट इज रीच h इज इक्वल टू प्लस a विच इज द एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम and this is the negative extreme minus a. Now in complete vibration, which means ये इधर गया, after that it returned back to the original position, then coming back to the negative extreme and then coming back to the original. So in this total journey, if I say what is the average velocity, so average velocity here is, what is the formula? Total displacement upon total time taken. ठीक है. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां से स्टार्ट किया था, इनिशियल पोजीशन इज दिस, एंड इन द लास्ट इट इज कमिंग बैक टू द इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन. so total displacement becomes zero, so which means average velocity will become zero. So option D is the correct one. I hope that you got it. Any kind of doubt, if you can ask.
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है आगे, y इज इक्वल टू ए नोड प्लस ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। तो फर्स्टली तो आप इसे एक ही फंक्शन में बनाओ, एदर इट इज साइन और कोस, सो इट वुड बी रिटर्न एज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, दिस विल बिकम साइन ओमेगा टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे दे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे साइन और कोस के एंगल में कन्वर्ट करो। ठीक है। वहां से आपके पास एक फर्दर एक क्वांटिटी बन के आएगी, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो अब जो पार्टिकल करेगा, ये तो यहाँ से तो फंक्शन आना ही है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन आएगा, उसका तो हमें बात ही नहीं करनी। ये होता है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यही डिस्प्लेसमेंट भी है पार्टिकल का। ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये है टोटल, और इसमें पार्टिकल ऐसे जा रहा है ए नोड प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये वैल्यू इस वैल्यू को कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कम ही कर सकती है ना, मैक्सिमम तो ये इतना होता है, क्योंकि यहाँ पे या तो साइन का फंक्शन बनेगा या कोस का, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो आपके पास यही रहेगा ना, और मैक्सिमम ही होता है क्या, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो ए नोड तो है ही पहले से, प्लस ये और मैक्सिमम जुड़ गया इसमें, तो ए नोड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस। यहाँ पे देखो ए नोड मिस है, तो ए नोड रख लेते हैं। ठीक है। This question, the displacement of a particle executing SHM is given by 3 sin 2 pi t plus pi by। देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, x इज इक्वल टू दिस, तो ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है जो यहाँ पे रिटर्न होता है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दिस इज फाइन। फाइनोड इज द इनिशियल फेज। अब यहाँ पे आप देखो कितना इजी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इतना इतना। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो एम्पलीट्यूड तो सीधा ही पता है 3 मीटर, जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड मुझे पता है क्या होती है, ए ओमेगा। ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली 2 पाई गिवन है, ए की वैल्यू 3 गिवन है, तो 3 × 2 पाई विच इज व्हाट 6 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 3 मीटर एंड 6 पाई मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ, otherwise the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and take care of yourself.